स्मरण में स्मृति उद्देश्य आम शुणा वक्तव्य स्वागत करने चाहिए। आज से एक विषय वस्तु आम निर्धारण करूँ से विषय निश्चय आम सभी आप्यायी था जहाँ स्वर मध्यम जहाँ शब्द भितर आम विभोर हवा एवं आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ ओडिशा ए हिस्टोग्राफी प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटीज से एक गुरुत्वपूर्ण विषय ओडिया पाठक और ओडिया दर्शकों निश्चय एक आवश्यक और स्वागतयोग्य शब्द अनुरोध करने चाहिए। आज जहाँ मुख्य शब्द माध्यम आम सभी विभोर हवा आपण समस्त करताली सहित स्वागत करने चाहिए। आज मुख्य वक्ता भाव में आम गहन में उपस्थित अच्छा प्रोफेसर किशोर कुमार बासा महोदय राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण अध्यक्ष भाव में वर्तमान से सेवारे करताली सहित स्वागत करबा एवं ए स्मारकी वक्तृतार आम समस्त को विभोर करने निमंते अनुरोध करेंगे। आज सभार सभापति श्रीजुत संजीव होता महोदय, विजयानंद बाबू, देवस्नंद बाबू, आज सभार मुख्य अतिथि ओडिशार मुख्य शासन सचिव श्री प्रदीप जेना महोदय, बिमल किशोर मिश्रंकर परिवार वर्ग एवं शुभाकांक्षी हितैषी एवं बंधुगण, मु बिमल किशोर मिश्र स्मृति संसद तरफ मते जो आज यही विराट दायित्व दि जाइछि सेथिपाई मु मोर हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। स्वर्गत बिमल किशोर मिश्र मो पाई तीनोटी परिचय। प्रथम परिचय समस्ते जानती सी जोटा मुख्य शासन सचिव कहले द्वितीय ओडिया आईएएस ऑफिसर एवं अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव होकरी सी सेवानिवृत्ति होते। द्वितीय परिचय सी होती जोटा भी मुख्य शासन सचिव कहले जे उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति एवं सी जो उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति मुझे जोड़े यंग लेक्चरर अध्यापक मुझे। तृतीय परिचय हूँ पारिवारिक से मो बड़ भाई आ उमा भाईना से माने बहुत क्लोज फ्रेंड्स। तेणु मुझे ये आसिक 1980 मसीह अध्यापक हिसाब से जॉइन कली मु बिमल किशोर मिश्र को तांकर से जो धला सार्ट पैंट आ हूँ कला एम्बासेडर यही दीटा मु देखी मुटा लेखी ना मोर प्रबंध रे मोर ए मन पड़ी मु मोर जो स्टूडेंट डेज रू मुझे आई एम ए लेट राइजर इवन टुडे आई एम ए लेजी मैन। मु डेरी रे उठे शहीद नगर रे आमे तीन भाई एक संगे रोथा हठात करी गोटे फोन आसे तो आज्ञा ये जो हैंडसेट फोन गोटे फोन आसला को मो भाई कहले तोर फोन अच्छी मुझे से 7:30 बधे हम मु एकदम आखि मणि बड़ी कर फोन टा धरली सेपटू मु बिमल मिश्र कहूँ मोर माने से निद पूरा हजिगला। मुझे हठात करी माने भाइस चांसलर मत फोन कर मोर से बयस हो 27-28 वर्ष यंग लेक्चरर मत कहले आपण परा स्टूडेंट्स यूनियन रो एसोसिएट एडवाइजर। मुझे सार आपण तो गला मीटिंग टा अटेंड करी नाहंती माने आपण माने जो मैंने बिमल किशोर मिश्र को जानते माइन्यूटेस्ट डिटेल्स कौटा छाड़ार ना। मुझे सार आम फिल्ड वर्क जाइली मुझे अटेंड करनी कि सार आम सीना जड़े एडवाइजर कि 4-5 जन एसोसिएट एडवाइजर तेणु अन्य सेक्टर जो अटेंड कर ना ना आपड़ आज 10:30 बेले मत ऑफिस देखा करेंगे। मुझे आपण से भी अच्छी तापर से तुम्हें कहले पर आसगला मुझे गली 10:30 बेलू गला बेलू 4 जन छात्र नेता बस से वर्ष बाणीबार जो इलेक्शन होती जो सभापति होती एआईएसएफ माने सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भाइस प्रेसिडेंट उपसभापति होती एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी
होउचंती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी होउचंती छात्र कांग्रेस। इलेक्शन सरी जाइए इनागुराल फंक्शन हम कुलपति चाहूँगी आम कुलाधिपति बा गवर्नर को आम डाक तो यांक भितर माने गोटे कनसेनसस एमर्ज कर पारुना जे से जो माने मिनिट टू मिनिट प्रोग्राम जोटा हम गवर्नर आसिले सेटा हो पारुनी कारण से मीटिंग रे किए आगे किए कह पछे किए कह जुक्ति लगुता मत सब डाकिले कहले बाबू ये मो सामने गोटे जुक्ति तर्क लगुच मत भल लगुनि यांकु नियो तुमे गोटे मिनिट टू मिनिट प्रोग्राम करी मत आज दब मुझे से गली डिपार्टमेंट को 3 घंटा तांको सहित डिस्कशन हला परे गोटे कनसेनसस एमर्ज कला सेटा आनी सार को देली तापरे गवर्नर आसिले प्रोग्राम बहुत भल है तापर सी आम से मल्लिक जड़े पीएस था वाइस चांसलर तांको मल्लिका को कहीदेले जे किशोर जिते आसो मु जहाँ काम करी मत छाड़देव मत एत ट्रस्ट करुले कि तो से मु चलीगली लंडन को तापर से बहुत शीघ्र चलीगले से बहुत दुखर कथा तो मुझ इट इज ए ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू पे माय हम्बल ट्रिब्यूट टू दैट ग्रेट सोल पितृप्रतिम व्यक्ति तेणु तांको मु प्रणाम जनाऊँगी जे सी आम समस्त को आशीर्वाद दिंतु या परे मोर आलेख्य किंतु मु क्षमा मागी नौची एटा हूँ इंग्राजी लिखी केतल केतल ओडिया भी कहबी विथ ड्यू परमिशन सर आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश बट समटाइम्स केतोड़ा ओडिया भी कहबी मु कहीं टॉपिकटा चूज कली कारण मु जतबेले सचिव मते कहले मु कहली देखंतु बोधे आपण जने सिविल सर्वेंट को डाकिले बेटर होता कारण से सार को बेसी रिव्यू करेंगे से कहला नहीं सेटा तो समस्त होमोज देवे किंतु यू स्पीक ए टॉपिक ऑफ योर चॉइस तेणु सेटार मु एडवांटेज नेली आ सेटार लिबर्टी नहीं द टाइटल इज आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ ओडिशा हिस्टोरियोग्राफी प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटीज I deem it an honor to have been invited to deliver the first Bimal Kishore Mishra Memorial Lecture. The late lamented Mishra was a celebrated civil servant who had contributed significantly for the cause of revenue administration in Odisha. His memorial work, Land Tenures and Land Reforms in Odisha, is considered the most authoritative work depicting the background of revenue laws codified in the state consequent upon the merger of the princely states and other regions. His seminal contributions to the enactment of other revenue laws such as Odisha Land Reforms Act, Odisha Survey and Settlement Act, Odisha Records Manual, etc. are still remembered with deep veneration in administrative circles. A strict, honest and kind-hearted man, Mishra stood out as an humble person with simple living style, setting an example for his fraternity. I mean it. I'm very serious. When I wrote this sentence, I mean it seriously. Mishra stood out as an humble person with simple living style, setting an example for his fraternity. He was also my vice chancellor at Utkal University when I was a young lecturer. Here he was one of the few bright students of his generation who had opted for mathematics as his honors subject and Sanskrit as a subsidiary subject. The only other person, only other Odia I can think of is Professor Allahabad University of Mathematics Professor Thile. प्रोफेसर त्रिविक्रमपति जे कि जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय भी कुलपति थे तांकर भी मैथमेटिक्स ऑनर्स ऑफ संस्कृत पास थिला he was one of the his deep interest in Sanskrit manuscripts is a pointer to his interest in our cultural heritage. Besides, he was director of culture government of Odisha for some time. Therefore, one of the best ways of paying tribute to late Mishra is by critically evaluating some aspects of our rich cultural heritage, and hence my talk on the present theme. Archaeology may be defined broadly as a reconstruction of the past from material remains. Often, such remains are incomplete. Therefore, the challenge in archaeology is how to reconstruct the whole of the past from such partial remains. Besides, archaeologists are what Randall Maguire calls socially situated scholars, and hence an archaeologist is as much a producer of knowledge as a creation of his time. With this preliminary statement setting the tone, I would discuss the issue of Odishan archaeological heritage in two parts, historiography and part two is problems and possibilities.
With regard to the historiography of Odishan archaeology during colonial period, I would like to confine myself to the colonial period for lack of time. Historiography implies a study on the trends and trajectories of a discipline in each period. For our purpose, we would confine ourselves to some major trends of Odishan archaeology during the colonial period. Although archaeology as a discipline is a colonial construct, there are some reports and accounts about places and sites of antiquarian importance during the pre-colonial period which took two forms. माने आपनकर जेतेबेले आर्कियोलॉजीटा डेभलप करूची जेतेबेले ब्रिटिश कॉलोनी हिसाब रे किंतु ता आगरु भी जेतेबेले जे जाउथिले मन करंतु बे ऑफ बंगाल रे जो जहाज सब जाउथिले से माने दूर देखुथिले ते ब्लैक पागोडा व्हाइट पागोडा रेफरेंस प्रचुर अछि सेही भलिया अबुल फजल केबे आसी नाहंती ओडिसा को किंतु अबुल फजल ओडिसा विषय भी लिखिचंती कारण से माने दे डिपेंडिंग ऑन दी अकबर्स आर्मी Andrew Sterling's 1825 general account of the political, social and economic aspects of coastal Odisha also included temple sites and antiquities of Odisha. The first significant account of colonial account on Odisha is Andrew Sterling's account in 1825. Now it had three aspects. First is his emphasis on the concentration of religious antiquities around four places of pilgrimage or chatta khetra jo kuchanti. हर क्षेत्र द विष्णु और पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्क और पद्म क्षेत्र एंड विजयी और द पार्वती क्षेत्र माने पुरी भुवनेश्वर कोणार्क एवं जाजपुर ऑल्सो इट कंटेन्ड एन इलस्ट्रेशन ऑफ द उदयगिरी इनस्क्रिप्शन रो गोटे छाप से देइचंती किंतु उदयगिरी इनस्क्रिप्शन सेतल पढ़ा ही नै 1825 बेलकू उदयगिरी इनस्क्रिप्शन पढ़ा ही नै एंड एन अकाउंट ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन सच एज ब्रिजेस फोर्ट्स एंड रिबेटमेंट्स चार्टा ब्रिज रो रेफरेंस आसुची सेतबेले सोरो पाखरे गोटे आपन अर्थनलिया एमती गिरी मराठा पीरियड रे चार्टा ब्रिज कंस्ट्रक्शन हेतला से तार रेफरेंस मध्ये सेथरे अछि ऑल्दो चार्ल्स वेल्किन्स laid the foundation of epigraphy होची स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस it was James Prinsep whose genius and labor helped archaeology to free itself from its antiquity and literary affiliation. As for Odishan epigraphy, there are two major contributions of Prinsep: the decipherment of the Hathigumba inscriptions at Udayagiri and the Osokan inscription at Dhauli during 1830s. 1830s रे आपनकर Osokan inscriptions का प्रथम decipherment हला James Prinsep को द्वारा. Subsequently, another Osokan inscription was discovered at Jowgad. Many scholars worked on Odishan inscriptions during the colonial period. They include Alexander Cunningham, Bhagwan Lal Indraji, Fleet, R.T. Banerjee, K.P. Jaiswal, B.M. Borua, Vincent Smith, Hulse, etc. The features of the epigraphic studies during the colonial period are the following. While history of Odisha to begin with was dominated by texts like Madala Panji, early 19th century Odisha history lekha hochi, it was heavily dominated by Madala Panji. In the later part of the history lekha hochi, setebale inscriptions asigalani, then inscriptions was given as a source. Through inscriptions, dynastic histories were brought to light. Inscriptions also helped in the reconstruction of historical geography of Odisha. However, there was hardly any emphasis on social and economic history. Tapare, there was a gentleman called Kito. Kito referred to the ruins and pillars of Jajpur and Dhauli. Jajpur jo pillar achi, it is very much, it is not an Osokan pillar, but very closer to that. It was James Ferguson who came out with clear terms about the typical features of Odishan temples, which included Bimana, Badodevolo, Jagamohana, Natamandiro, and Bhogopandapa. This term guda, first time used korchonti James Ferguson. James Ferguson karo importance hala je sie India ro jo architectural history lekhuchonti आगु कौन होता खाली केवल डिस्क्रिप्शन नहीं होता गोटे मोनुमेंट को डिस्क्राइब कर दिया होता किंतु जेम्स फर्गुसन वाज द फर्स्ट स्कॉलर यूरोपियन स्कॉलर जे कि गोटे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मोनुमेंट्स देले जेतले से ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव टा दउथले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ओडिसा रे भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टा देले जोटे कि हमरो कहउची जे हमरो लेट अस से जो ओल्ड टाउन रे जंती 6th 7th century until 12th 13th century पर्यंत कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ टेंपल्स होची दैट इज द इंपोर्टेंस ऑफ जेम्स फर्गुसन. Besides, he for the first time provided a historical approach to the study of Odishan temple architecture by postulating the chronology of various temples. Se chronology भी कहले को temple को शताब्दी. According to Ferguson, it is very interesting, and I quote: "In Odisha, on the contrary, the style is perfectly pure, being unmixed with any other, and thus forms one of the most compact and homogeneous architectural groups in India." It's a very compact and homogeneous architectural groups. But it was Rajanlal Mitra who is the first Indian to work on the archaeology of Odisha in a comprehensive manner by publishing 2 volumes, Antiquities of Odisha 1875 and Antiquities of Odisha Volume 2 1880. Like Ferguson, he also emphasized the typical features of Odishan temples. Mentioning the use of iron beams at Puri and Konark,
He remarked, however, that the ironette konark was of superior quality and was perfectly forged. In fact, आपनकर जो वर्तमान भी प्रोफेसर ओंकार महांती and his group, they are working on the archaeometallurgical dimension of the forged iron. That's a very typical. आपण माने समस्त खाली जाई कि कोणार्क टेम्पल देखि दउचंती किंतु तार सेठरे जो iron beam अछि, that itself is a sort of scientific that has got immense scientific value. In Odishan temples, Mitra stated, human beings are light and natural, while for gods, the principle of Shilpa Shastra were generally but not very strictly adhered to. Mitra also touched on the social conditions of the temple builders, dress, ornament, furniture, domestic utensils, etc. As to the religious history, the earliest was Buddhist, followed by Saiva and Vaishnava. Now, while Sterling, Ferguson and Mitra confined their studies to coastal Odisha, it was Begler who was asked by Cunningham to survey Odisha during the 1870s and who reported the antiquities of Khiching in North Odisha, the fortified settlement of Jaugado in South Odisha, and the Chausudi Jogini temple of Ranipur Jorial. Aguru kon heichi apanakar first part of 19th century kebal coastal Odisha upare emphasis diya heichi. Kintu Alexander Cunningham jetebale Archaeological Survey of India first director general hele, sie Ganga Valley taku pura apanakar Balda gadre bullock cart re se bulichanti. Kintu sie Odisha asparleni. Tenu sie tankar assistant Begler ko pataile. So Begler reported sepote Kolkata ru astundi tenu sie Khiching North Odisha ko koile epote Jaugad gale Jaugada apanakar like Sushpalgad another city Sogan inscription अछि ebong sepote Balangir ko gale जे जोटा चौसठी जन टेम्पल एगुड़ा सब फर्स्ट टाइम रेफरेंस आसुची ओडिशान आर्कियोलॉजी कॉन्टेक्स्ट रे आरटी बनर्जी एक्चुअली आरटी बनर्जी इज माय फेवरेट ही हैज पब्लिश्ड 2 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ओडिशा 1930 एंड 1931 45 वर्ष रे से मरि गले ही वाज द पर्सन जे कि आपनकर जो हरप्पा एक्सकवेशन करथिले जॉन मार्शल से ताकर ते पडिलानी तनु से चाकरी छाडी देकरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रे प्रोफेसर हेले एवं सेतिक बेले मयूरभंज महाराजा तांको देले टंका देथिले जे आपण हिस्ट्री ऑफ ओडिशा लेखंतु एवं सही बेसिस रे दीटा वॉल्यूम से लिखिथिले हिस्ट्री ऑफ ओडिशा 1930 1931 30 फर्स्ट वॉल्यूम बेलकु से पहुंचीथिले सेकंड वॉल्यूम बेलकु से चली गले इट वाज आरटी बनर्जी हु रिगार्डेड उदयगिरी केव्स एज जैना but found difficulty in knowing how Odishan architecture developed in the 8th centuries between Khandagiri and Udayagiri. See like se kon koile se just refine kale mane jo Ferguson ko jo historical perspective of temples in Odisha deithile R.D. Banerjee taku auri refined kale takur she found some fault with him and taku refined kale kintu tankar gote most important insight hauchi je on the basis of an inscription in the Mukhamandapa of the Amriteshwara temple at Holal in South India, R.D. Banerjee talked of the Kalinga style as a distinct style of architecture. Besides the Nagara, Dravida and Vesara style. Se kale aguru kon hotla eta ko ame Kalinga style of architecture to ki distinct boli kohun hotle. Ye gote inscription dekhele Karnataka ro ebong sethire dekhili se कहले je Nagara, Vesara and Dravida sangare Kalinga is a separate temple style of architecture. Seta first time anuchunti R.D. Banerjee. The earliest type of had tapare se 3 phases of Odishan temples kotha कहउचंती से तीनटा फेज रे केमती डिफरेंट एरियाज रे फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज केमती डेवलप करछि से कथा कहउचंती किंतु बेनर्जी करो जदि आपण हिस्ट्री ऑफ ओडिशा से देखिबे दैट इज ए रीजनल हिस्ट्री आपण जतले समकालीन आपण जतले रीजनल हिस्ट्री आपण अन्य जगह रे जो अन्य ओडिया रे जो लिखा हिची या सहित तार गोटे एटा इट इज फार बेटर देन दैट कहीं ना फॉर द फर्स्ट टाइम प्री हिस्ट्री माने जोटा आपनकर प्री रिटन फेज ऑफ हिस्ट्री जोटा आप नॉलेज ऑफ राइटिंग सहित हिस्टोरिकल फेज जोड़ा जाए तेणु 6th सेंचुरी बीसी रु ऑनवर्ड्स आम हिस्टोरिकल पीरियड कहूँ तेणु प्री 6th सेंचुरी बीसी माने जोटा स्टोन एज कल्चर सामर थिला ये तांकर हिस्ट्री ऑफ ओडिशा रे प्रथम चैप्टर लिखुछन्ते प्री हिस्ट्री ऑफ ओडिशा मु भाबुची सेतेबेले जते रीजनल हिस्ट्री जो लिखा है प्री हिस्ट्री वाज नेवर ए पार्ट ऑफ द राइटिंग इन हिस्ट्री ऑफ ए रीजन तेणु सेटा होची तांकर गोटे बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर सेकंड कथा जोटा मु कहली कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कथा से फर्स्ट टाइम सेटा को आनिले लोक गोचर को आनिले थर्ड होची जे आगु जोटा मु कहली प्रथम जे लिटरेरी सोर्स माने आपनकर मादला पांजी होची तापरे इंस्क्रिप्शन सर्च कला इंस्क्रिप्शन होची ये apart from literary and epigraphic sources, he used numismatic, but study of coins. सेटा भी से कहले इट्स एन इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एटा से कॉन्शियसली डेवलप करेले आगु सेपरेटली लोक कॉइन्स ऊपर स्टडी करछंती किंतु कॉइन्स एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री एटा आर.डी. बनर्जी बहुत कॉन्शियसली यूज करेले तापरे
as far as prehistory is concerned, Valentine Ball was a geologist, and in 1874, से अनुगुल तालचेर ढेंकानाल एंड बुरसापल्ली एथुरु पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स रेफर कले एवं तापरे 50 वर्ष परे 1923-24 रे परमानंद आचार्य ताको निजो गां जो वैद्यपुर सेथिरे जो ग्राउंड स्टोन टूल जोटा कि नियोलिथिक कल्चर रो एविडेंस आनले एवं सब्सिक्वेंटली इन 1940s आपनकर फॉर द फर्स्ट टाइम कलकत्ता यूनिवर्सिटी निर्मल बोस एंड धरणी सेन से माने कोलियोना बोली गोटे जगह अछि मयूरभंज सेटा फर्स्ट टाइम से माने स्टोन एज कल्चर्स रो एक्सकवेशन कले. Now let us discuss some major issues of historiographical importance. The first is colonialism and nationalism, debate between James Ferguson and Rajendra Mitra. With regard to the earliest stone architecture in India, James Ferguson had argued that since there was no evidence of stone pillar prior to the Ashokan pillars in its developed form, the Indians learned the art of the earliest stone architecture from the Greeks. आमने आमर इंडिया रे कोन होईची ना आपनकर अशोकन पिलरटा गुटे डेवलप्ड फॉर्म ऑफ स्टोन पिलर हेकरी आज जाईची तेणु तार प्रेसिडेंटा कौन के जन कहउछ सेटा वुडन फॉर्म रे होता थाई पारे तेणु सेते बेले गुटे डिबेट हेईची कॉलोनियल माने कॉलोनियल पर्सपेक्टिव होउछ जेम्स फर्गुसन राजेंद्रलाल मित्र होउछंती नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव जेम्स फर्गुसन कहउछंती जे क्वाइट पॉसिबल कारण दैट तुमे एटा होउछ माने ग्रीक रु इंडियन माने शिखिछंती ये सेटा को अपोज करछंती राजेंद्रलाल मित्र ताको दृढ़ भाव में अपोज कर नहीं सेमती किसी एविडेंस नहीं देयर इज नथिंग लाइक दैट तेणु देयर इज अ डिबेट बिटवीन जेम्स फर्गुसन एंड राजेंद्रलाल मित्र किंतु सबटे इंटरेस्टिंग है सेटू एज टू द ओरिजिन ऑफ द स्टोन आर्किटेक्चर ही सेड इट अपीयर्स परफेक्टली सेल्फ इवॉल्व्ड सेल्फ कंटेन्ड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नियस एडमिक्सचर एटा राजेंद्रलाल मित्र कहउछंती. Thus James Ferguson represents the colonial perspective and Mitra the nationalist perspective. Since Odishan monuments represent authentic Indo-Aryan architecture, Mitra used Odishan sort of temple art architecture to assert his nationalist perspective. Because Odisha temple traditions, as I have already said, it represents an authentic tradition. Tenu se Odisha no temple traditions taku tako nationalist perspective re use koruchonti kiye Rajendralal Mitra. Ferguson se ette bigidi gale yanka upre was so annoyed with Mitra that he wrote a small book in 1884. Se bohiro na hala gya Archaeology of India with special reference to Babu Rajendralal Mitra. Man se ette bigidi gale yanka interpretation re. Accusing Mitra of distorting his views, Ferguson stated his that means Mitra's patriotic soul was fired with uncontrolled indignation at the bare idea of his countrymen having taken a hint from the foreigners or borrowed a single idea from such a people as Greeks. Eta mu quote kali Ferguson ko. More importantly, he made a link of this episode with the issue of Ilbert Bill. Apna bhabantu जो आर्कियोलॉजी पॉलिटिक्स कथा कहा होची जे वर्तमान हो माने हला वाली 20th सेंचुरी रे आर्कियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स इज थोरोली लिंक्ड इन 19th सेंचुरी कॉलोनियल पीरियड रे भी सी एते रागी गले सी कोन कहले ना इल्बर्ट बिल आपनकर मने थिबो लॉर्ड रिपन टाइम रे इल्बर्ट बिल हेतिला 1881 रे सेतरे कोन इल्बर्ट बिल कहला जे इंडियन जजेस माने मध्य ब्रिटिश लोकों को दे कैन ट्राई द ब्रिटिशर्स आल्सो सेइतरे जो ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन और शार्पली डिवाइडेड हो गला जे किछि कहले जे नहीं नहीं आमे तो डेमोक्रेसी को आमे तो डेमोक्रेसी कथा सिखौछु तेणु आमे काहे कि प्रिवेंट करबा इंडियन्स मान को नॉट टू ट्राई द ब्रिटिशर्स किंतु आउ जण जो माने टिके एरोगेंट से माने कहले ना दे आर कॉलोनी हमरो आमे से माने केमति हमको ट्राई करबे तो इट्स शार्पली डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन मान भावंतु ये एते रागी जाइछन्ति जे से जो इल्बर्ट बिल रो डिबेट आउ आर्कियोलॉजी मिसई देले किए जेम्स फर्गुसन एवं सेटा जदि कॉलोनियल एरोगेंसटा कोन एटा ए पैराग्राफटा पढले आपण माने जानि परिबे से कहले अकॉर्डिंग टू फर्गुसन द रियल इंटरेस्ट हाउएवर ऑफ द वॉल्यूम जो बोइटा से लिखिथिले आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू बाबू राजेंद्रलाल मित्र if any will probably be found to reside not in the analysis of archaeological works of Babu Rajendralal Mitra but in these days of discussion on Ilbert bills. In the question as to whether the natives of India are to be treated as equal to Europeans in all respects. Under present circumstances, it cannot fail to interest many to dissect the writings of one of the most important members of the native community, Rajendralal Mitra, that we may lay bare and understand his motives and mode of action, and thus ascertain how far Europeans were justified in refusing to submit to the jurisdictions of natives in criminal actions.
माने से एटाकू लिंक कर दे जे जदि गोटे नेटिव रो गोटे एलिट लोक जदि मो कामटा को एते डिस्टर्ट करी पारे ताले गोटे साधारण नेटिव कोन करबो तेन तुम काहे केमति देई देबो सेमान को क्रिमिनल लॉ को हम ऊपर ये करिया पई सो दिस इज वन नाउ देयर कैन बी नो बेटर एग्जांपल ऑफ colonial arrogance. A reading of Ferguson shows that his appreciation of Indian architecture in antiquity is masked by his condescending and arrogant attitude. A small stir on the part of R.L. Mitra resulted in the oozing of colonial arrogance when condensation about contemporary colonial India got the better of an appreciation of its sublime architectural heritage. This dichotomy remains a hallmark of Oriental scholarship in colonial India. Now, then the second point is dream of domination, colonized as colonizer. आपण देखो तो राजेंद्रलाल मित्र ओडिशा मोनुमेंट को यूज करूचंती टू सब्सटेंशिएट द नेशनल पर्सपेक्टिव टू काउंटरएक्ट द कॉलोनियल पर्सपेक्टिव किंतु सेही राजेंद्रलाल मित्र जतबेले आसी जाउची ओडिया लैंग्वेज को आसी जाउची से कुछ नहीं ओडिया सेपरेट लैंग्वेज नुहे इट इज अ पार्ट ऑफ बेंगली समथिंग लाइक दैट तो सेहीटा तेणु मोर आर्गुमेंट होउची जे हाउ द सेम पर्सन हु वाज जतबेले फर्गुसन भिसाभी फर्गुसन होउचंदी कॉलोनाइजर राजेंद्रलाल मित्र हेले कॉलोनाइज्ड किंतु जतबेले लैंग्वेज कथा आसी जाउची राजेंद्रलाल मित्र इज बिकमिंग कॉलोनाइजर एंड द ओडियाज आर बिकमिंग कॉलोनाइज्ड so that subtle difference but same person apne tole this is called historiography you cannot just take a black and white approach towards a historical phenomenon. So, from the historiography point of view, it is indeed interesting to note that R.L. Mitra represents a good example of a colonized individual behaving as a colonizer. This becomes all the more apparent when one compares the diametrically opposite attitude he nourished towards the Odishan antiquities on the one hand and the contemporary language on the other. Mitra considered that Odisha represented a pristily traditional Indian civilization cordoned off by mountains and the Bay of Bengal and hence subjected to restricted Muslim onslaught. The ancient monuments of Odisha were therefore more authentic than many other parts of India. At the same time, Mitra had the Bengali contempt for contemporary Odia culture and language between 1860s and 1880. There was an intense debate as to whether Odia was a separate language or not. While Bengalis like Kanti Chandra Bhattacharya and R.L. Mitra argued that it was not a separate language, the latter even considering Bengali, Odia and Assamese actually as one language, and that Odia language should be abolished from the school curricula, some other enlightened Bengalis like Gauri Shankar Rai, editor of Utkala Deepika, and R.L. Banerjee, as well as British civil servant John Bims, supported the cause of Odia language and literature. There was a debate between Natavara Samantrai and Gaganandra Das. These are actually very well-known historian of Odia literature, Natavara Samantrai and Gaganandra Das, two reputed historians of Odia language and literature in post-colonial Odisha over the role of Rajendralal Mitra. Samantrai, Natavara Samantrai, yanku support kale, kaku, Rajendralal Mitra ko support kale. Ebang se koile and tried to exonerate Mitra by stating that the latter, that means Rajendralal Mitra, did not have adequate knowledge of the heritage of Odia literature. See hoto Odisha ro je ete rich Odia literature achi Rajendralal Mitra setara jani nathile. Secondly, se koile je Rajendralal Mitra laid emphasis on higher education rather than mass education. Ebang tritiyo kotha koile je Rajendralal Mitra desired a pan-Indian unity. Ita ei tinta ground here koile Natavara Samantrai. Kintu Gaganandra Das, on the other hand, citing a number of instances, argued that there was less likelihood of R.L. Mitra being ignorant of the richness of Odia language and literature. Das emphasized instead that Mitra was an important textbook writer. This is very interesting. Rajendralal Mitra was an important textbook writer in Bengali, and hence his disparaging remarks about Odia language might have been in no small measure due to his potential benefit as a Bengali textbook writer in the event of the introduction of Bengali as a medium of instruction in Odishan schools, because he was a textbook writer. That is the view of Gaganandra Das. Now, the third historiographical point I would like to take up is what you call appropriation of Jagannath for political legitimation. Although the study of Jagannath cult in Odishan cultural history has been emphasized mostly in the post-colonial period, it is interesting to note that it was R.D. Banerjee, writing during the colonial period in 1931, who for the first time argued that the Eastern Gongos in medieval times had made active propaganda about Jagannath Puri so that they could be more acceptable as rulers. Thus, Banerjee pointed out that Puri was originally a local holy place, a shrine of Odishan aboriginals, where worship was taken over by the Eastern Gongos. He also stated that the sanctity of Puri is due entirely
to very active propaganda which seemed to have been begun with the conquest of the northern Odisha by the eastern Gongas. The German historian Hermann Kulke during 1970s further refined it by arguing that the construction of the Vaishnavite Jagannath temple by the traditionally Saivite Gongas was primarily a political means to secure legitimation which culminated in the ritual dedication of the whole Odishan Empire to Lord Jagannath in the early 13th century by the Ganga king Anugabhiva III. It is more कहया कथा होची मु very carefully देखिछि एटा आपनकर Hermann Kulke got I mean he was celebrated because of his theory of this appropriation of Jagannath cult for political legitimation. But आपण माने सेटा मु एटा देखिया पई चाहिली जे 40 वर्ष हरमान कुलके 1970s रे कथा कहले किंतु 1931 रु आरडी बनर्जी सेटा कहि देई जंती तो मु सेट पई कहे जे हमर ओडिसा रे आमे सोशल हिस्ट्री लिखिछु इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखिछु पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखिछु डायनेस्टिक हिस्ट्री लिखिछु सब कथा करिछु किंतु इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ओडिसा रो भलो भाबरे लेखा है नै तनो हिस्ट्री ऑफ आइडिया जोटा होची आमे वी सेलिब्रेटेड कुलके मु ए पॉइंट आउट ता कली कुलकन को फेलिसिटेशन वॉल्यूम रे छापी छि जे फर्स्ट आइडिया that Jagannath being used as a means of political legitimation is not by Kulke, it is by R.D. Banerjee. That has to be born in 40 वर्ष आगु से लोक कहि चलेनी. Now my second part of the lecture, the problems and possibilities. Now I would like to say that 2 points I would like to make. In 2000 I had edited 2 volumes of archaeology of Odisha. तेणु बर्तमान सेतबेले until 1990s ओडिसा रे जते काम होइतला that was included. But secondly, during the last 3 decades, scholars from a number of institutions have been engaged in conducting fieldwork in Odisha. Such institutions include Archaeological Survey of India, Odisha State Archaeology, Odisha Institute of Maritime and Southeast Asian Studies, Universities of Utkal, Sambalpur, Berhampur, Revensa, Calcutta, California and Deccan College. It is time that an up-to-date account of Odishan archaeology should be brought about, incorporating the contributions of various scholars. Thirdly, the setting up of various institutes like Institute of Physics, IIT, NISAR and Institute of Life Science have also opened up scope for multidisciplinary and interdisciplinary aspects of Odishan archaeology. Now let me just point out certain problems and kon hi paribo Odisha archaeology kon hi paribo seta mo pura stone age ro armo kari medieval parjanta pahunchi just gote hint kar degi jibi mo pratham katha hala Kuliona site of Kuliona Morimanj Baripadar seta 16 km बर्तमान कौन होइछि आगरु गोटे समय विश्वास करा होतला हमर जो पुरातन प्रस्तर जोग कथा कोहा होछि सेतबे विश्वास करा होतला जे इंडिया और यूरोप प्राय समान 500,000 years ago almost विश्वास कर देइथिले नाउ लास्ट 20 years ओडिसा इंडिया रो जो काम हला विभिन्न जगह रे सेतरे गोटे अतिरपंक बोली गोटे साइट अछि तमिलनाडु रे शांति पापु सेठी एक्सकवेशन करचंती टिकोडा बोली गोटे मध्य प्रदेश साइट अछि हमर ओडिया आर्कियोलॉजिस्ट एसबी होता काम करचंती एम द नंबर ऑफ साइट्स सेगुड़ा डेटिंग करा को देखा जाउची इट इज मोर देन 1 million एवं शांति पापु हैज पब्लिश्ड हर पेपर इन बोथ इन साइंस एंड नेचर एंड वर्तमान तनु द यूरोपियन स्कॉलर्स एक्सेप्ट दैट द ओरिजिन ऑफ लेट्स से एसुनियल कल्चर इन इंडिया इज मच प्रायर टू दैट ऑफ इट्स एमर्जेंस इन आपनकर यूरोप तनु वर्तमान हमरो ओडिसा रो जो कोलियोनार जो जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट आ अतिप्रकर जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑलमोस्ट सिमिलर तेणु जदि आम कोलियोना जदि एक्सकावेशन करू it will also I mean we can trace back the origin of culture to not less than 1 million years ago. That excavation is of primary importance. Second होची जे हमरो जो undivided Koraput district thousands of varieties of wild rice अछि आमर जोटा जतबे भैबिलो बोली जने जियोग्राफर थिले से 7टा रीजन कहितले जे ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर पई एवं एज फार एज राइस एग्रीकल्चर इज कंसर्न से साउथ चाइना नॉर्दर्न बेंगल साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एटा गोटे जोन करथिले किंतु देयर आर अदर एरियाज व्हिच आर इंपोर्टेंट फॉर द ओरिजिन ऑफ द सेकेंडरी ओरिजिन ऑफ राइस तेनो मोर काई मन होची ए जो छत्तीसगढ़ रो जो जो जोटा नक्सलेट एरियाटा सर ए जो Bastar, yes, Bastar and undivided Koraput. More than 30,000 varieties of wild rice achi. Tenu sethire the origin of rice raw possibility asi pare. Another jinso hochi jota Neolithic culture, Neolithic jota nutan prostor jugo re mane jetale ki moniso chasa kama kari sikla. So dita aspect gote hochi gote Bonai area re gote Sulabh Dihi gote site achi Pradeep Behera Sambalpur University sethi se kama karthile. It's a huge site.
I mean, excavation is necessary there. And secondly, what I say, that I Odisha and Southeast Asia relationship kotha kohu, seteବେଳେ ଆମେ maritime kotha kohu. I will come back to that issue later on. Kintu gote Neolithic time re about 2000 2500 BC ei time tare there was a mainland relationship also. The northern mainland Southeast Asia, Northeast India, and Eastern India. Eastern India mane apankara Chotnagpur this area. या भितरे गोटे mainland through रे गोटे relationship थिला. एवं सेथिरे तीनटा aspect आसुची. गोटाय आसुची what we call shouldered edge, गोटा की archaeological evidence. आ गोटा होची जे linguistic group, Austro-Asiatic linguistic groups. Now Austro-Asiatic linguistic groups रो जो distribution आपण देखिबे northern mainland Southeast Asia, Northeast India एवं आमरो मालकानगिरी रे सरी जाउची, आमरो undivided कोरापुट रे सरी जाउची, जे बंडो दे सेटु सरी जाउची, सेटा they are the terminal point of Austro-Asiatic linguistic groups. Third aspect है जे ये जो ethnographic माने जो different communities अछंती सेथरे गोटे hemoglobin E बोली गोटे blood रा जो स्टडी करा जाए गोटे hemoglobin E बोली गोटे कंटेंट अछि एवं सेही hemoglobin E northeast mainland southeast एशिया रा आसुची northeast India रो आसुची एवं ओडिसा रा किछि population भितर भी आसुची तनो ए जो तीनटा dimension को मिसई किरी one can reconstruct the Odishan contact with mainland Southeast Asia through northeast. That is another important challenge. Now coming to Chalcolithic and Iron Age, first metal आपनकर मनुष्य कॉपर टा यूज करछि किंतु कॉपर टा का सॉफ्ट. You will be happy to know गोटे समय विश्वास करा होतला जे हमर माने शिशुपालगढ़ आरंभ होछि अशोकंकर जो शिलालिपि दौड़ी सेठू हमर हिस्ट्री आरंभ हो जाउछि किंतु वर्तमान कोस्टल एरिया रे आपण एई कोस्टल रे गुडाई साइट एक्सकावेशन लानी सुआबराई जीवन पट्टनायक करछन्ती बंगहरपुर मु आ रवि महांती करछन्ती गुडाई साइट सब एक्सकावेशन होछि तनो सेटा that helps in the जे हमर जो ग्राम्य संस्कृति कोहा होछि the emergence of farming communities in Odisha सेटा होछि Chalcolithic period रे जणा पड़िबो तनो सेठी रे that also needs to be done बहुत काम हेलानी that needs compilation. Same is iron age iron age रे गोलबाई शासन पीके बेहरा हिकुड़ी in western Odisha and आमे सानकेरजंग in near Angul एठी iron रो evidence मिलछि तनो जदि आमे कहबा iron age तार chronology केबे केजन कहलेनी वर्तमान 1000 BC रु भी पूर्ण हेलानी iron age ओडिसा रे that is to be and तार archaeometallurgical dimensions कोन माने जो source of iron टा कोठो आसुतला that is also an important issue. Now coming to early historic urbanization and state formation, the site of I'll take 2 minutes here. The site of Sipalgad was excavated by B.B. Lal immediately after independence and by R.K. Mohanty and Monica Smith of University of California during the last 2 decades. Square pattern एठी गोटे कोन होची हमर शिशुपालगढ़ रो गोटे जे स्क्वायर पैटर्न माने आपनकर टाउन प्लानिंग ठीक जौगढ़ रो भी सेया एवं कौटिल्य अर्थशास्त्र कहउचंती जे स्क्वायर पैटर्न टाउन प्लानिंग वाज द आइडियल टाउन प्लानिंग. नाउ 25 वर्ष तळे जतले मु लेखुतली गोटे पेपर सेतळे कोन होतला राजगीर रो गोटे साइट अछि सेथरि भी गोटे स्क्वायर पैटर्न टाइम गोटे फोर्टिफिकेशन अछि तने मोर मन हला दैट द कांसेप्ट सेटु आछि किंतु इंटरेस्टिंग हिची कोन लास्ट 20 इयर्स भितरे हमर जो काम हिची ओडिसा रे जो काम हलानी द largest number of square patterned early historic fortified sites are in coastal amar odisha ro miluchi india ra kothi ete milu nahi tenu ete jo square pattern apon ajikali jo smart city kotha kahuchonti it was a kind of mane I cannot use the term smart city but ideal town planning kothi lankaro that was the square pattern town planning tenu seita this is very important एठी कोन होची ना आमे भाबुतले जे आयरन ए जोडी अर्बन सेंटर टा ग्रो करची 3rd सेंचुरी बीसी काहे कि ना अशोकन इनस्क्रिप्शन टा मिल गेला तन 3rd सेंचुरी बीसी जो असो सॉरी सोसपालगटा पाखरे तन 3rd सेंचुरी बीसी किंतु रवि महांती आ मोनिका स्मिथ जो एक्सकवेशन दैट हैड सेटा को ट्रेस बैक कॉलोनी 7th सेंचुरी बीसी को 7th सेंचुरी बीसी को माने हमर अर्बन सेंटर टा 7th सेंचुरी बीसी रु आसलानी तेनु आमे जो भाबुतलु जे अशोकन को इन्वेजन फरे हमर अर्बनाइजेशन हला दैट्स नॉट करेक्ट वी हैव आवर internal dynamics also. Ashokan invasion might have accelerated the process. That's a different story. But we had a sort of indigenous evolutionary trend of urbanization in Odisha. Another problem is to understand the variations of emergence of urbanization in early Odisha. For example, one could argue that the coastal Odishan urbanization could be primarily the product of intensification of agriculture and trade and exchange, both maritime and other. Man karo Sipalgad amar ethi mati ta badhiya. Teno intensification of agriculture and trade and exchange
they form the economic basis of coastal Odishan urban centers. किंतु जिते आपन जाउछन्ती असुरगढ़ को हमर अनडिवाइडेड कलाहांडी से जो एक्सकैवेशन होची सेतरे कोन जे दैट एरिया इज वेरी रिच इन सेमी प्रेशर स्टोन्स तेनु सेमी प्रेशर स्टोन्स that had also played a very important role in the formation of urban centers in western Odisha. किंतु सेही भलिया northern Odisha रे बर्तन सुधा excavation हेई नाही तेनु विराटगढ़ is another site near Khiching which needs to be excavated to understand the variations of early historic urbanizations in Odisha. While emphasis has been put on urban sites, hardly any emphasis has been given to understand the urban-rural interaction during early history period. I mean, urban centers super highlight कर देलु, किंतु urban center आउ coast rural, जेमती वर्तमान आपण कर भी urban center सहित rural सहित इंटरनेशनल सहित relationship अच्छी, सेतबे सिया थिला, किंतु सेही रकम स्टडी टा वर्तमान सुधा विशेष हेई नि. I am just referring to three aspects. There is good potentiality of such an exercise. For example, the potteries and terracotta of ear ornaments from Korkora in Lower Morhidi Valley have great similarity with those of Sisupalgarh. Similarly, there is need for a comparative study of pottery from Noriso in Prachi Valley, excavated by Sadasi Pradhan, and that of Susipalgarh. Moreover, I had found some punch-marked coins from Ghumor on the bank of Khodkai in Mayurbhanj district, which is located in a rich iron ore zone. It is possible that such coins, punch-marked coins in Ghumor might have been received from the Magadhan Empire in exchange of iron. तापर आसुची जो मेरीटाइम हेरिटेज ऑफ ओडिशा जोटा आपण ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया ऊपर समस्त कोंती इठी बेणुधर पात्र सुनील पटनायक आशुतोष प्रसाद पटनायक केएस बेरा एवं मु समस्त ए ऊपर काम करछु फ्रॉम द क्लासिकल लिटरेचर इट इज नोन दैट टेक्सटाइल एंड आइवरी वर द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट टू साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम ओडिशा बट इट्स अ ग्रेट चैलेंज टू एक्सकैवेट दिस कारण आइवरी हो कि टेक्सटाइल हो एक्सकैवेशन पाइबा इट इज वेरी डिफिकल्ट बट we have also pointed out that related ware, knobbed ware, glass and semi-pressure stone beads which are found from the various sites in Coromandel coast, including Odisha, among other things, show the cultural contact between Odisha and Southeast Asia. There are a number of port sites on the bank of Chilka Lake, such as Manipatna, Palur. Palur is being excavated by Sunil Patnaik, which may throw more light on such issues. Excavation koruchonti. It is time that more emphasis should be given to excavate port sites for unraveling Odisha's rich maritime heritage, showing contacts with Southeast Asia and China. Collaboration with scholars working on Southeast Asia is also the need of the hour. Now let me come back to medieval archaeology. As far as medieval archaeology is concerned, I am medieval archaeology कहला माने मंगल temple कथा कहूँ. किंतु medieval sites हमर बहुत अच्छी. For example, Barabati बर्तमान excavation चालीची. Archaeology Survey of India is excavating Barabati. Khalkata Patna near Konark ଆଉ Barabati एवढा परे Chinese pottery मिलीची. Chinese coin भी मिलीची Khalkata Patna रो. While Manikpatna and Barabati have yielded Chinese pottery, Chinese coins have been found from Khalkata Patna. The site of Barabati is being excavated now by Godnaik of ASI. The issue is, whether there was a 9-story building or a new palace or a 9 enclosures were there at Barabati port. Amar सबले कुआ जाय कोन कोइ जे सेठी गोटे 9-story building थला. कि जो foundation देखा जाउची सेठी 9-story building unless there is a wooden structure 9-story खबाटा it is very doubtful. तेणु सेठी कोन होईची जो वर्ड टा अछि नव नव जो वर्ड टा अछि नव मीन कुड बी 9 नव कुड बी न्यू नवटा आपको 9 भी पारे न्यू भी पारे तेणु वेदर इट मेंट ए न्यू पैलेस और आउ जने इंटरप्रिटेशन कहउचंती जे इट कुड बी इट इज अ पैलेस विथ 9 एनक्लोजर्स गोटा पैलेस रो इट इज नॉट 9 स्टोरीड but it might have 9 enclosures. So this is an issue which I am sure the present Barabati excavation may throw light. Another issue is rock art heritage. Amar kon hi last 50 वर्ष भितरे आपनकर साउथ अफ्रीका ओडिशा साउथ अफ्रीका इंडिया एवं ऑस्ट्रेलिया एटी रॉक आर्ट ऊपर स्टडी हेची. ओडिशा रे मध्ये रॉक आर्ट बहुत भाबरे मिलिची. सदाशिव प्रधान प्रदीप बेहरा एमन सब बहुत भलो काम करचती. स्पेशली वेस्टर्न ओडिशा रे प्रचुर रॉक आर्ट मिलिची एवं रॉक आर्ट रे गोटे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दरकार. जेतले मो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव सम्मेलन डायरेक्टर थी गोटे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट मुझे देइथिली जोथरे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट चारिटा डिसिप्लिन लोक मैंने आमर डॉक्यूमेंटेशन करथिले एई रॉक आर्ट उपरे. आ गोटे हला आर्कियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म. या परे आपण माने समस्त जानती मुता ऊपर विशेष कहबिनी बट इंपोर्टेंट जिनस जोटा कि मु पॉइंट आउट करिया पई चाहूची जे वी नीड एन इंटेंसिव सर्वे ऑफ वंशधारा. आमे जेटा मिस करूचे वंशधारा कहीं ना वंशधारार जो अपर पार्ट ऑफ वंशधारा रे आपनकर कोटपाड़ गोटे एरिया अछि सेतरे कोन रोमन कॉइन्स मिलिची. रोमन कॉइन्स केवल 3टा जगह मिलिची ओडिसा रो बामन घाटी आ एपटे आपनकर कोन सेटा ए जो कोटपाड़ तापर कोन हिची ना सेठी आपनकर वोल्केनिक एश अछि. तो वोल्केनिक एश टा रो डिपॉजिट टा दैट कैन डेट यू द प्रिवेलेंस ऑफ स्टोन एज कल्चर्स.
तापरे लोअर वंशधारा रे आपण जोटा कि वर्तमान आंध्र प्रदेश एरिया रे आसीगला सेठी मुखलिंगम अछि तापरे दि तीनटा साइट आसुची मुखलिंगम आसुची तापरे कोडे गला सालीहुंडम दंतपुरम सालीहुंडम कलिंगपट्टनम एगुडा सब साइट आसुची कोठी लोअर वंशधारा रे तेणु आपण जदि कलिंगपट्टनम जो पोर्ट साइटा इट इज येट टू बी आइडेंटिफाइड किंतु मोर कह कथा जदि आप प्रकृत में कलिंग हिस्ट्री जानापी चाहूँगी ताले वंशधारा सर्वे इज द नीड ऑफ द आवर कंक्लूडिंग रिमार्क आई नो यू आर इम्पेशेंट द क्वेश्चन इज व्हाट डज आर्कियोलॉजी टीच अस प्लीज जस्ट आई वुड ड्रॉ योर काइंड अटेंशन 2 minutes प्लीज I'll stop the question is what does archaeology teach us to me as a discipline it provides a long term perspective it is the longest term right from stone age culture to medieval period it's the longest time span apanकर आसुची so it's a long term perspective ye diye secondly it shows that despite challenges humankind has survived in the past and hence it helps us nurture an optimistic view ame tole we are thinking of nuclear winter ध्वंस हो जोगी पृथ्वीटा किंतु आमे आर्कियोलॉजी देखु जे विभिन्न समय रे क्राइसिस आछि मनुष्य को किंतु humankind has survived so therefore archaeology gives you a sense of hope archaeology gives you an optimistic approach towards life thirdly it also shows tolerance and inclusiveness as known from a sculpture at Konark where King Narasimha I most likely depicts himself worshipping Lord Jagannath Mahishamardini Durga and Shivalinga implying a religious synthesis in medieval Odisha आपण गोटे कोणार्क म्यूजियम रे गोटे अच्छी से तीन टाइम पूजा करूँगी तेणु आम जो आजिकल कहूँ इनक्लूसिवनेस टॉलरेंस दैट एग्जांपल्स आर देयर इन आवर आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन thus one could say this is important one could say that archaeology is not merely knowing about the past it is also a source of ideas about what particular society one aspires to be. This dimension of archaeology has not yet been emphasized in Odisha. It is time we should undertake this for an inclusive and sustainable future. What I mean to say is that archaeology mane bhabuche khali past. No, archaeology also contains ideas. जो आइडिया को नहीं करी आपण चिंता करिवे को रकम विश्व आपण गठन करिया पई चाहउछथि. So therefore that futuristic dimensions of archaeology has not been emphasized in Odisha as yet. I think it is time that we should emphasize that aspect of Odishan archaeology. I once again pay my tribute to late Bimal Kishor Mishra, who to me was a good human being, which is becoming rarer. विश्वास करंतु जीवन रे बहुत ब्रिलियंट लोक आमे देखिलु बहुत जिंस देखिलु मु भाबुची 66 वर्ष प्लस हेगलानी मोर सबुठु जदि कष्ट सबुठु जदि दुष्प्राप्य होची जने गोटे भलो मनीष विमल मिश्र जने भलो मनीष थिले I think that is the greatest tribute one can give to Bimal Kishor Mishra. I convey my sincere thanks to all of you, ladies and gentlemen, for a patient hearing. धन्यवाद.